guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, Makeup and Makeup. Sorry, Makeup and Makeup. So I know I was missing from the last 2-3 months, and it's a very long time. But I was actually busy in my final exams and my Eid vacation because हमारी ईद आ गई थी तो ईद में बिजी हो गए थे और समर ब्रेक जब आया तो यूनिवर्सिटी लाइक एक साल से इतना थका देती है एक इंसान को क्या कहते यार ब्रेक ले लो तो इसलिए मैंने ब्रेक लिया आई नो कि मैं बहुत कंसिस्टेंट नहीं हूँ बट स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट और आज का चैलेंज आज की जो वीडियो है वो एक रैंडम चैलेंज वीडियो होने वाली है बिकॉज आई एम गोना डू माय मेकअप विदाउट एनी मिरर लाइक मैं कोई भी मिरर यूज नहीं करने वाली मिरर सो मैं जितना भी मेकअप करूँगी वो सारा लोग है मिरर के करूँगी और अगर मेरी किसी पैलेट में मिरर आती है तो आई विल मेक हाइलाइट बाय एनी ऑफ द पैलेट और एनीथिंग लाइक दैट सो let's get started. First I'm gonna use my skin primer and it is basically a shadow primer and it is by JCAT and it has a little bit of shimmer inside it because मेरी skin already बहुत ज़्यादा dry हो रही है तो इस मौसम में already skin बहुत ज़्यादा dry और dull हो जाती है but मैं ये skin primer use करने वाली हूँ थोड़ा बहुत जो shimmer है उससे होगा कि मेरी skin पे थोड़ा glow आ जाएगा और skin will brighter. So I'm gonna take a very little bit of it. So I'm gonna go for a very lighter and lightest of the lightest blue and the lightest coverage foundation. So yeah, I'm gonna use Miss Rose matte hair liquid foundation in the shade beige 2. और इसको भी मैं बहुत थोड़ा सा लूँगी बिकॉज इट्स ऑलरेडी एज आई टोल्ड यू गाइस बिकॉज गर्मी है बहुत ज़्यादा मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि वही बढ़ जाओ यार इसको मैं बगैर मिरर के लगाऊंगी कैसे यार गाइस बगैर मिरर के मेकअप करना बहुत मुश्किल है मुझे लग रहा था ऐसा लोग चैलेंज कर रहे हैं बहुत आसान होगा और बड़ा इजीली हो जाएगा but it's not like that at all. I know I'm gonna do a blender. Like I have no mirror right now but still I'm trying my best. Okay. Guys, I hope I'm not doing a blender. Okay. And please do subscribe to my channel. Six and a half hours later. I think it's totally blend out. Now I'm gonna use my beauty blender for further blending and look at कि क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा यार लिटरली मैंने बहुत मुश्किल चैलेंज फील किया बट स्टिल हम करके दिखाएं Guys, never forget your neck because neck is also part of the body. So आप लोगों को उसको अच्छे से कवर करना है बनाओ बहुत बड़ा लगेगा क्या है तो यार ये कोई अलग सेंस करने का तरीका है भाई ऐसे सेंस करके आपको पता लग जाता है कि फाउंडेशन हर जगह लगती है या नहीं लगती सो गाइस आई थिंक कि जो भी किया होगा ठीक किया होगा कहीं पे कुछ गलत नहीं किया होगा नाउ आई एम गोना अप्लाई माय कंसीलर एंड आई एम गोना यूज माय मैट इन द शेड I think it's the shade or it is but it is in the numbers I think 01 or 02 so yeah now I'm gonna apply यार आँखें कितना डाल little bit over here little bit over here इधर और अपने फेस को थोड़ा सा लिफ्ट करने के लिए आप लोग यहाँ भी लगा सकते हैं फजूल के मैं काम करी ठीक है नहीं मुझे चाहिए ये वाला क्योंकि मैंने बहुत ऑलरेडी बगैर मिरर की करी हूँ यार लेकिन स्टिल वही मेकअप तो मुझे पूरा करना है क्योंकि आई एम अ मेकअप ऑब्सेस्ड पर्सन राइट नाउ आई एम ब्लेंडिंग माय कंसीलर जो मैंने लगाया है
और मेरे पीछे एक ऐसी आवाज़ मुझे महसूस हो रही है जैसे कोई बचपन में जो हमारे माँ बाप हैं वो चू वाले जूता नहीं बनाते थे। खैर हमारे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं बनाया, आई एम सॉरी, बट मेरे ख्याल से बाहर से कोई बच्चा गुजरा होगा वो जूता पहन के और वो इंजॉय कर रहा है अपने उस नए शू को। सो इग्नोर दैट वॉइस, ओके। आई होप कि ये भी टोटली सही से ब्लेंड हो गया। सो आई डोंट नो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई माई ब्लश। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं टिंट लगा लूँ या मैं पाउडर प्लस लगा लूँ। चलिए वी गो फॉर द टिंट। दिस इज अ पता नहीं कितना ज़्यादा लगा है कितना ज़्यादा नहीं लगा, बट जोकर ना लग रही हूँ इस वक्त। मुझे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने, बट स्टिल करनी है यार। ये तो लिटरली बहुत ज़्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मेरे को परेशान नहीं होना। टेंशन लेके ना आई ओके, अब ये ठीक हो गया होगा। अब मैं भी काटूंगी लगे। So now I'm gonna apply my काजल, और उस काजल को मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि आई मेकअप भी हो जाए थोड़ा सा और लाइनर भी लग जाए और सब कुछ हो जाए भाई, सब कुछ हो जाए बस, ठीक है। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। इसको मैं ब्लेंड कैसे करूँगी बगैर मिरर के गाइस? ये मैंने गलत काम कर लिया। A few moments later. माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। अब हम करते हैं इसको ब्लेंड। I'm gonna blend it with the help of this brush. I will बहुत ज़्यादा लगा। यार ये आसान है, इसमें अच्छा खासा मुश्किल जाएगा। चीजें हो गए मेकअप करना इज लिटरली टोटली डिफरेंट गेम। आई डोंट नीड टू थिंक ब्लश। चल जो भी होगा। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्सर करने के लिए हम इसमें ट्रांजिशन शेड ऐड कर देते हैं और एज यू गाइस कैन सी मिरर है, बट मैं इसके अपनी सारी करती और आगे बिल्कुल हाइड हो चुका है, इसको बिल्कुल नहीं आ रहा है। So I'm gonna take this Supernova shade from the palette of Huda Beauty Mercury and I'm gonna apply it to hair with ये गाइस में देखिए बेवकूफ मैंने विदाउट मिरर मेकअप करा, मैंने विदाउट ब्रश नहीं किया, बट चलिए कोई बात नहीं। आज भी बड़ी मेकअप करेंगे। आई होप कि मैं इतना मुश्किल ना लगे। चलिए हम इसको बस मेरे पास मिरर नहीं है और मैं ये इसमें लेना चाहती हूँ कि मैं कोई सो मैं सोच रही हूँ कि हम थोड़ा सा पाउडर ब्रश को लगा दें। काजू को आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, नजर आ रही है लेकिन नहीं इसके हम मेकअप करने की अच्छा करें। Yeah.
guys, I think इतना बहुत है. So अब एक चीज रह गई है mascara और अब हम लगाएंगे mascara. So let's get towards. And I just forgot to bring my eyelash curler, and I'm using the mascara of Bob. It is a very good mascara. Guys, फिर से पूछना वो बच्चे की बात आई तो बच्चा बहुत होशियार है. So we are done with the makeup. Now we are just doing the one last step. Whether should I go for my finishing spray or my setting spray, or should I apply this highlighter? I think इसमें मैं इस वाले highlighter में नहीं जाऊँगी because already जो मेरा makeup fixer है इसमें shimmer है तो वो already coat दे देगा. So yeah. So I'm done, and yeah. So ये था मेरा आज का challenge, makeup without the mirror, and I hope कि मैंने जो किया हो अच्छा किया. Oh my god, I just forgot my lip shade. Don't tell me guys. ये तो बहुत ज़्यादा नहीं लगा. This is a very nude, very light peach silk shade of medora in the shade 552 matte, and I love this shade, and my mother also loves this shade too. Or this was all for today. I hope you guys like it and haven't joined me yet, so go and press the bell icon and do subscribe my channel, or keep supporting and keep loving, and inshallah see you in the next video. Bye bye.